Hello everyone, this is Professor Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, today we're going to discuss about a very important topic, that is law of variable proportions. Friends, I would like to inform you, see, we have already know that how much two laws are very important in economics, that is what we call law of demand and law of supply. As it is, whether you're doing a production or if you are an entrepreneur, so you need to be take care about the production and its related activities. So whenever we are doing or whenever you people are doing production, you need to be always take care about the law of variable proportion. So now in this video we're going to deeply discuss about law of variable proportion. As you can see on the screen, in this video lecture we're going to cover the law itself, and apart from the law we'll discuss about its assumptions. Definitely we'll deal with its schedules, which we call the table and tabular form of the law of variable proportions, and at last definitely we have to be learn the diagrams too, and along with its explanation. So let's start. And as you can see on the screen on my thumbnail page, I have just add one picture which represented the diagram of law of variable proportion, and would like to inform you friends, the diagram of law of proportion, it is also called as law of diminishing marginal returns. Later on I'm going to teach you why the law of proportion is also called law of diminishing marginal returns. So let's start. सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं मीनिंग पार्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है. द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाज डेवलप्ड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिक्स टू explain the behavior of agriculture product. Now specifically we know that India is an agri world, right? So हम यहाँ पर agricultural production जो करते हैं इसका majority is very high as compared to the other products and its production. So basically this law was developed by the classical economist, and especially in which area? We can say that in the agriculture area. So agriculture output को produce और generate करने के लिए जो law apply किया जाता है, basically this law is called law of variable proportions. आगे proceed करते हैं friends. See, this law is also known as law of diminishing marginal returns, जो आपने अभी मेरी वीडियो के थंबनेल पर देखा कि हम इस लॉ को law of diminishing marginal returns भी कहते हैं. मैं आगे आपको इसके बारे में डीपली सिखाऊंगी. Then the law examines the behavior of the production in the short run. लॉन्ग रन में जो बिजनेस चलता है इसके लिए तो एक प्रोडक्शन वगैरह जो फिट करते हैं हम लोग, टारगेट सेट करते हैं, बट इन अ शॉर्ट रन हम अगर प्रोडक्शन को और उसके बिहेवियर को एग्जामिन करना चाहें, सो दिस लॉ इज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. Okay, now it's all about the meaning part of the law. Now let's learn about the definition. Before going to start with the definition, I would like to inform you about the law of proportion in a simple word. Now I can see that when the quantity of one factor of production increases, you need to be just repeat it again, you need to be just listen it again, I'm going to repeat it again. See, when the quantity of one factor of production increases, मतलब production के लिए we know that we have a 4 factors of production which we call land, labor, capital, entrepreneurs. And we know that the factors of production have some payment of production. So land का payment होता है wages के रूप में, लैंड का जो पेमेंट होता है वो होता है रेंट के रूप में, और लेबर का जो पेमेंट होता है वो होता है वेजेस के रूप में, एंड कैपिटल से वी गोना अर्न सम इंटरेस्ट अमाउंट, एंड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दे डेफिनेटली वर्क फॉर टू अर्न प्रॉफिट. So these are what we call the factors of production which we are supposed to use for do production, and we have to give them payment also, which is called पेमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके फ्रेंड्स, सो अगर किसी भी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप कोई भी फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, इफ़ यू आर ऑफर ऑन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, अगर आप जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं वाइल कीपिंग ऑल फैक्टर्स कांस्टेंट, इट विल रिटर्न्स इन द
decline of the marginal production. मतलब as simple as that, or in a simple word I can say that law of variable proportion ये कहता है कि भाई जब भी आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हो, या फिर आप कह लें कि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी वेरिएबल को बढ़ाते हैं, या फिर आप कह लें किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, मतलब आपने लैंड पहले आप 10 जैसे कि लेबर एंड कैपिटल अगर आप ले लें, सो आप किसी प्रोडक्शन के लिए 10 लेबर और 10 कैपिटल यूज़ करते थे, और अभी आपने 12 लेबर और 14 कैपिटल यूज़ कर दिया. इट मीन्स यू इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ क्वांटिटी. सो क्वांटिटी के प्रोडक्शन के लिए जब भी आप फैक्टर्स को बढ़ा देते हो लाइक लेबर एंड कैपिटल, सो उसकी वजह से जितना मार्जिनल प्रोडक्शन आप करोगे वो उतना डिक्लाइन होगा. हाउ इट विल डिक्लाइन, विल सी टू इट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. बट सी एज सिंपल एज दैट दिस स्टेटमेंट इज शोइंग दैट कि अगर वेरिएबल प्रपोर्शन ये कहता है कि क्वांटिटी को अगर आपने प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर बढ़ा दिया, सो आपका जो रिटर्न्स होगा ना वो डिक्लाइन होगा. दिस इज व्हाट वी कॉल इन अ सिंपल वर्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. और अभी मैंने ये कहा कि आप कोई भी फैक्टर इंक्रीज करो तो आपका जो रिटर्न्स है, आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होगा. डिक्लाइन होना इट मीन्स डिमिनिश. सो जो रिटर्न्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं. दैट इज वाई द लॉ ऑफ प्रपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. मार्जिनल इज एडिशनल, एक्स्ट्रा. जितना भी एक्स्ट्रा factors of production you're going to use, you will see the declination in your results. Okay, so now see the definition according to the Paul Samuelson. Okay, so there's one correction, this is Paul. So according to Paul Samuelson, an increase in some input relative to other fixed inputs will give in a state of technology cause output increase, but after a point of extra output resulting from the same addition of the extra inputs will become less and less. मतलब जितना भी आप एक्स्ट्रा और एडिशनल जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हो for the production of same quantity, you will be see the declination or the diminishes in your result. As simple as that. So you can, आप सिर्फ मीनिंग को भी एलॉबरेट करके लिखेंगे then it will fine. और अगर आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं according to Paul Samuelson, so you need to be make sure कि ये जो आपका डेफिनेशन है वो इसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. ठीक है, चलिए फिर प्रोसीड करते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द assumption. There are only 4 assumptions for this law, so you can see on the screen, friends. So first is a fixed factors. So definitely whenever we are discussing about a law of variable proportion, we need to be assume that there are 2 fixed factors. See, I have told you that factors of production के लिए we have land, labor, capital, entrepreneur. So आपका जो entrepreneur होता है और जो land होता है, it's a fixed factor. So मैं ये कह सकती हूँ कि land and entrepreneur will be the fixed factors of production. So we need to be assume that कि only the land and entrepreneurs and other things you need to be assume that it will be constant. So it will be fixed also, we can say that. Second assumption is variable factors. Variable means changeability, flexibility and variability. So इसका मतलब होता है जो चेंज हो सकते हैं. So at the time of production I can do change in only in labor and capital. I can increase or decrease with the labor amount and units, and I can increase and decrease with the capital units and capital amount. Okay, so this will be under in a variable factor. Now the second is homogeneity of the variable factor. Variable factors आप जितना भी increase कर रहे हो, it should be homogeneous at the all level of pointers. Like isocont we have learned already. So if you want to watch that video too, you need to learn isoconts too. So you can go and check my YouTube channel, and definitely even I'm going to share the link on my description page. Okay, so then we have state of technology. We need to be assumed at the time of doing this law, we need to be assumed that the technology will be constant. Okay, now these are the 4 assumptions for the law. Now let's learn about the schedule of law. ठीक है, so schedule for law is, you can see at the column 1 we are representing the labor and units. Then total labor को यूज़ करके total production कितना हो रहा है, average production and marginal production. Marginal is nothing but additional and extra production कितना हो रहा है. So units we have from 1 to 10. Total product
आप देख सकते हो ये गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन में, अगर सम सॉल्व करने के लिए आता है सो इट विल बी आस्क फॉर द 8 मार्क्स, और अगर नहीं भी आता है, अगर आप ये लॉ लिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, सो इस लॉ के प्रिपरेशन के लिए आप एटलीस्ट टोटल प्रोडक्शन आपको खुद से लिखना है। सो आप इसका बिहेवियर याद रखें कि ये इंक्रीज़ होगा एवरी यूनिट्स में, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कॉन्स्टेंट होगा, देन इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है। सो टोटल प्रोडक्शन मतलब 1 यूनिट लेबर यूज़ करने पर आप 5 प्रोडक्शन करते थे, 2 यूनिट ऑफ लेबर व्हेन यू आर यूजिंग यू आर प्रोड्यूसिंग अ टोटल प्रोडक्ट दैट इज़ 14, व्हेन यू आर यूजिंग labor factor from 3rd to 10, so you are increasing, or 3rd to 7 we can say. So as you can say 1 to 7 में आपने देखा your total production was increasing, but at the stage of 8 or 9 your production has started declining, right? It started constant 102 102 and later on it start declining. That is why it is called diminishing, this law called. So now here you need to learn that how you are going to calculate average product. So whenever you are doing calculation of the average product now friends, so here I am writing this formula. Average production को find calculate करने के लिए you need to be do these things. TP should be divided by quantity, or also you can say labor. So जब TP, this is what we call total product. Here you have a total product. 5 divided by 1 will be 5, 14 divided by 2 will be 7, 30 divided by 3 will be 10, 90 divided by 7 will be 14. So as it is, you have to divide at the column of average. Then marginal is at extra. So marginal के लिए I am going to give you a simple formula. So marginal product find out करने के लिए TP में you need to be subtract second minus 1. This is a simple technique what I am going to share with you people, because there is one formula that is Tn something, but you can go directly with this formula. See here you have a total product wala line, you need to be second minus 1, you need to be what you are supposed to do, second minus 1. 14 minus 5, pehla stage will remain same, 5 to 5, 14 minus 5 9, 30 minus 14 16, 56 minus 30 26, 75 minus 56 19, 90 minus 75 15, is like that. So you can see on the marginal product friends, so you can observe that it started increasing, but at one point at the stage of 9 unit it has become 0 and then it started negative, it started working negative. या मैं ये कह सकती हूँ कि marginal output क्या होता है, increase होते होते क्या होने लगा, 0 and it has become negative. So that is why this law is called diminishing marginal रिटर्न्स. मतलब जितना भी वेरिएबल प्रोडक्शन, मतलब जितना ये लेबर आपने जितना ज़्यादा बढ़ाया उतना रिटर्न आपका स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीज होना. दिस इज द फैक्ट ऑफ दिस लॉ. Okay, now let's proceed for the explanation for this schedule. With the explanation for this schedule, you need to explain this law in only on 3 pointers. You need to explain about the total product behavior, then average product behavior and marginal product behavior. How? So here you can see that one thing you can see, total product ka behavior is like that. It was a start, it's increasing, then it's become constant, then it diminishes. So you have to explain this in the total product wala point. Average product में आपको यही same, increasing and then decline, increasing, 0 and negative. This is what you're supposed to explain for this schedule. Now let's discuss about the diagram friends. So here we have a diagram. On the y-axis we are representing output, and on the x-axis we are representing variable factors, which we can say called as labor and capital, and collectively we can say labor factor. हम एक साथ इकट्ठा ये कह सकते हैं कि भाई ये labor factor है. ठीक है, as simple as that. डायग्राम इज सो ईजी. ये जो 3 आपने कर्व्स बना रखे हैं ना फ्रेंड्स, यही चीज़ों को आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कॉन्स्टेंट डिक्रीज, इंक्रीज कॉन्स्टेंट डिक्रीज, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज डिक्रीज, marginal product increase, 0 and negative. This is what we are supposed to represent, that what we are supposed to geographically represent. ठीक है, here डायग्रामेटिकली हमको रिप्रेजेंट करना है. सो नाउ फर्स्ट कर्व आप मेरा देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, दिस इज टीपी कर्व. टीपी हैज स्टार्ट, आप मतलब ये इंक्रीज हुआ, फिर सी पॉइंट पे ये कांस्टेंट हुआ, टेंशन लाइन दिखा सकते हैं, देन इट्स डिक्रीजिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल टीपी. देन नेक्स्ट वाला लाइन हम देख सकते हैं फ्रेंड्स. अगर मैं आपको बता दूं एमपी के एपी के बारे में, एपी स्टार्ट इंक्रीजिंग,
देन इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग, बट वो ना ज़ीरो हुआ ना नेगेटिव हुआ, सो आपको एक्सिस के ऊपर दिखाना है. देन थर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी एम पी इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर ये ज़ीरो हो गया. देखिए ये ओरिजिन है, दिस इज, अगर वो एक्स एक्सिस को टच किया मतलब यहाँ पर वो ज़ीरो हो गया, एंड एक्स एक्सिस के बिलो गया, इट मीन्स इट्स बिकम नेगेटिव. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू एक्सप्लेन हियर. दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज. फर्स्ट फेज में टी पी, ए पी, एम पी ऑल आर इंक्रीजिंग. सेकेंड फेज में टी पी स्टार्ट कॉन्स्टेंट, MP start decreasing, AP also start decreasing. Third phase में TP start decreasing, MP start decreasing, AP start decreasing, MP has become zero and then it's negative. That's it, what we are supposed to explain in the diagram explanation. Phase 1, 2, 3 आपको just explain करना है. That's it. Any query, any doubt है, so you can directly connect with me on my YouTube channel, friends. So here we have completed. I have shown the formula too. You can take a screenshot for the shortcut trick, friends, and that's all enough for today. And if you have any query and doubts, you can kindly make a comment on my YouTube channel, friends. That's all enough for today. We'll meet again for a new and good new videos. So thanks for watching. Thanks for keep watching. Do like and subscribe to my YouTube channel, friends. Bye bye. Have a nice day. Take care.